Early yesterday, Australian time, 3 heads of government could be seen on TV screens, lined up behind podiums on the San Diego coastline, the US president flanked by the prime ministers of Australia and Britain. The occasion was the announcement of a project to provide Australia with nuclear-powered submarines in the future. The first step will be for Australia to purchase up to 3 US Virginia-class submarines in the 2030s. The SSN AUKUS variety subs are not expected to surface or submerge until the 2040s. The UK, or whatever is left of it by then, will embrace the same model. Some of these boats are intended to be built in an Australian shipyard, although the initial components of the fleet will involve Australian funding for US manufacture. The main impetus is based on growing fears of China's purported designs and the possibility of a military takeover of Taiwan. Any such mission would be a dumb move by Beijing. It would likely occur, though, long before Canberra has any nuclear submarines to throw into the fight, presumably at Washington's initiative. Joe, Rishi and Albo go fishing in murky waters. I have been hearing about Australia's future submarine project ever since my family settled here more than a quarter-century ago. One consistent theme has been that the nation's existing fleet of Collins-class submarines was no longer fit for purpose. For a long time, that purpose was hardly defined. But lately it's become more obvious, a fear of China, exacerbated by Xi Jinping's reluctance to play nice. Earlier this century, Australia agreed to purchase conventionally powered submarines from France. There were delays and cost blowouts in the years that followed, but Emmanuel Macron was miffed a couple of years ago when the previous Australian PM, without clearly alerting Paris, cancelled the deal and signed up to AUKUS with Joe Biden and Boris Johnson. AUKUS might sound like the name of an extinct Antipodean flightless bird, but it just stands for Australia UK-US, 3/5 of the global Anglosphere. For the first half-century of its existence as an ostensibly independent nation, Australia remained umbilically attached to the British Empire. The cord is yet to be severed, as the royal component of its Air Force and Navy's nomenclature indicates. But in the post-war environment, it also latched onto the US, and in the past 6 decades or so that has become the dominant relationship. That has been reflected for ages in the secretive US listening station at Pine Gap in the Outback, and more recently by an increasing number of boots on the ground, not to mention unrelenting Australian participation in US wars from Korea and Vietnam to Afghanistan and Iraq. AUKUS will no doubt enhance the US presence, with US nuclear submarines scheduled to start docking at Australian ports in a few years, so that the kids can be initiated into the grown-up world of underwater warmongers. The yellow peril is a long-standing trope in Western strategic thinking, initially targeting 19th-century Chinese migrant workers in the US and Australia. It was revived when China went communist and Vietnam successfully resisted French and American might. It went into cold storage while Beijing's capitalist rotors held sway and the Soviet Union imploded, but re-emerged after Chinese capitalism proved a bit too successful, and the Communist Party elevated a leader willing to challenge US hegemony, euphemistically known as the rules-based order. One does not need to endorse Xi Jinping's alarming predilections, notably his regime's possible designs on Taiwan, let alone Vladimir Putin's misbegotten and misanthropic misadventure in Ukraine to raise questions about the Western response. The US military-industrial complex is the biggest beneficiary of Russia's shenanigans, which partly explains the lack of interest in halting that war. But what good can possibly come from seeking to establish a cordon sanitaire on China's southern periphery? In the troubling event of hostilities breaking out, it will no doubt loudly be proclaimed that there was no provocation, as in the case of NATO's blithely misrepresented expansion eastwards. Not all that long ago, it was just about possible to envisage Australia staying out of a conflict between its biggest trading partner and its closest military ally. That's no longer conceivable. It would inevitably be a target in any US-China confrontation. Hopefully, it will never come to that. But if it does, it will likely be long before Australia has any nuclear-powered submarines of its own. Yesterday, the side of Biden,
in the Top Gun aviator sunglasses he wore in Kiev last month, flanked by his Australian and British flunkies, Anthony Albanese and Rishi Sunak, talking about peace while preparing for war, spontaneously evoked the idea of the Three Stooges auditioning for Dr. Strangelove. Published in Dawn, March 15, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. ऑस्ट्रेलवी वक्त के मुताबिक कल सुबह सवेरे 3 सरबराहान हुकूमत को टीवी स्क्रीनों पर देखा जा सकता था, जो सान डियागो की साहिली पट्टी पर पोडियम्स के पीछे कतार में खड़े थे। अमरीकी सदर के साथ ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के वज़राए आज़म भी मौजूद थे। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया को मुस्तकबिल में जोहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज़ें फराहम करने के मंसूबे का ऐलान किया गया। पहला कदम ऑस्ट्रेलिया के लिए 2030 की दहाई में 3 अमरीकी वर्जीनिया क्लास आबदोज़ें खरीदना होगा। SSNAU की के इस किस्म के ज़ैली हिस्से 2040 की दहाई तक सतह ज़ेर आब होने की तवक्को नहीं रखते हैं। बरतानिया इस वक्त तक जो कुछ भी बाकी रह जाएगा वही मॉडल अपनाएगा। इनमें से कुछ कश्तियों को ऑस्ट्रेलवी शिपयार्ड में तामीर करने का इरादा है, हालांकि बेड़े के इब्तिदाई अज्जा में अमरीकी तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलवी फंडिंग शामिल होगी। बुनियादी मुहर्रिक चीन के मुबैना अज़ाइम और ताइवान पर फौजी कब्जे के इम्कान के बढ़ते हुए खदशात पर मबनी है। इस तरह का कोई भी मिशन बीजिंग का एक अहमकाना इक़दाम होगा। ताहम ये मुमकिना तौर पर कैनबरा के पास जंग में फेंकने के लिए कोई जोहरी आबदोज़ होने से बहुत पहले हो सकता है, मुमकिना तौर पर वाशिंगटन के इक़दाम पर, जो ऋषि और अल्बो गंदे पानियों में मछली पकड़ने जाते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया के मुस्तकबिल की आबदोज़ मंसूबे के बारे में तब से सुन रहा हूँ जब से मेरा ख़ानदान 1/4 सदी पहले यहाँ आबाद हुआ था। एक मुस्तकिल मौजू ये रहा है कि कोलिंस क्लास आबदोज़ों का मुल्क का मौजूदा बेड़ा अब इस मकसद के लिए मौजू नहीं था। एक तवील अरसे तक इस मकसद की वजाहत मुश्किल से की गई थी, लेकिन हाल ही में ये बात ज़्यादा वाज़ेह हो गई है। चीन का खौफ शी जिनपिंग की अच्छा खेलने में हिचकिचाहट की वजह से बढ़ गया है। इस सदी के अवाइल में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से रिवायती तौर पर चलने वाली आबदोज़ें खरीदने पर रजामंदी जाहिर की थी। इसके बाद के बरसों में ताख़ीर और अखराजात में इजाफा हुआ, लेकिन इमानुएल मैक्रोन चंद साल पहले इस वक्त नाराज़ हो गए थे जब साबिक ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने पेरिस को वाज़े तौर पर खबरदार किए बगैर मुआहदे को मनसूख कर दिया था और जो बाइडन और बोरिस जॉनसन के साथ यूएस पर दस्तखत किए थे। यूएस एक मदूम एंटीपोडन फ्लाइटलेस परिंदे के नाम की तरह लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका है, जो आलमी एंग्लोस्फेयर का 3/5वां हिस्सा है। एक बज़ाहिर आज़ाद कौम के तौर पर अपने वजूद की पहली निस्फ सदी तक ऑस्ट्रेलिया बरतानवी सल्तनत के साथ नाली के लिहाज से मुंसलिक रहा। रस्सी अभी तक कटना बाकी है, जैसा कि इसकी फ़िज़ाइया और बहरिया के नाम का शाही जुज़्व ज़ाहिर करता है। लेकिन जंग के बाद के माहौल में ये अमेरिका तक भी पहुंच गया और पिछली 6 दहाइयों में ये गालिब ताल्लुकात बन गए हैं। इसकी 81 सदियों से पाइन गैप में वाक़े खुफिया अमरीकी सुनने वाले स्टेशन और हाल ही में ज़मीन पर जूतों की बढ़ती हुई तादाद से होती रही है, जिसमें कोरिया और वियतनाम से लेकर अफ़गानिस्तान और इराक तक अमरीकी जंगों में ऑस्ट्रेलिया की गैर मुतज़लज़ल शिरकत का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि अमरीका की मौजूदगी में इजाफा करेगा। अमरीकी जौहरी आबदोज़ें चंद सालों में ऑस्ट्रेलिया की बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होना शुरू कर देंगी, ताकि बच्चों को ज़ेर आब जंगी जुनून की बढ़ती हुई दुनिया में दाखिल किया जा सके। पीला खतरा मगरिबी तस्वीराती सोच में एक देरीना अंसर है, जिसमें इब्तिदाई तौर पर अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में 19वीं सदी के चीनी तारिकीन वतन कारकुनों को निशाना बनाया गया था। जब चीन कम्युनिस्ट हो गया और वियतनाम ने फ्रांसीसी और अमरीकी ताकत का कामयाबी से मुकाबला किया तो उसे दोबारा जिंदा किया गया। यह सर्द खाने में चला गया जब बीजिंग के सरमायादाराना रूगरज का गलबा था और सोवियत यूनियन कमज़ोर हो गया था, लेकिन चीनी सरमायादाराना निज़ाम के कुछ ज़्यादा कामयाब साबित होने के बाद दोबारा उभर कर सामने आया और कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऐसे रहनुमा को खड़ा किया जो अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज करने के लिए तैयार था,
जिसे आमतौर पर कवायद पर मबनी निज़ाम के नाम से जाना जाता है। किसी को शी जिनपिंग के खतरनाक अज़ाइम, खास तौर पर ताइवान के बारे में उनकी हुकूमत के मुमकिना अज़ाइम की हिमायत करने की ज़रूरत नहीं है। व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन में गलत बयानी और गलत मुहिम जोई की बात तो दूर की बात है ताकि मगरबी रद्द-ए-अमल के बारे में सवालात उठाए जा सके। अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स रूस के शीनीगंज से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला इदारा है, जो जुज़वी तौर पर इस जंग को रोकने में अदम दिलचस्पी की वजाहत करता है। लेकिन चीन के जनूबी इलाके में मुहासरा कायम करने की कोशिश से क्या फायदा हो सकता है? दुश्मनी शुरू होने की परेशान कुन सूरत में इसमें कोई शक नहीं है कि कोई इश्तिआल अंगेजी नहीं की गई थी, जैसा कि नेटो की मशरिक की तरफ गलत तरीके से तोसी के मामले में हुआ था। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, ऑस्ट्रेलिया को अपने सबसे बड़े तिजारती शराकतदार और उसके करीबी फौजी इत्तेहादी के दरमियान तनाज़े से दूर रखने का तसव्वुर करना मुमकिन था। ये अब तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये लाजमी तौर पर अमेरिका और चीन के किसी भी तसादुम में एक हदफ होगा। उम्मीद है ये ऐसा कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया के पास जोहरी तवानाई से चलने वाली आबदोजों को हासिल करने में बहुत वक्त लगेगा। गुज़िश्ता रोज कैफ में पहने गए टॉप गेनीवेटर चश्मे में बाइडन के साथ उनके ऑस्ट्रेलियन और बरतानवी फिलोनिकी अंथोनी अल्बानीज और ऋषि संग जंग की तैयारी के दौरान अमन के बारे में बात करते हुए नजर आए तो खुद ब खुद ये ख्याल उभरा कि थ्री स्टूजेस डॉक्टर स्ट्रेंज लो के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। अखज़ शदा बतारीख 15 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.